Yes, good evening, all of you. हॅलो. हाँ बोला सर. पण वाट बघायची आहे का, कारण मला पार्टिसिपंट खूप कमी दिसत आहेत. सर ऍक्च्युली काय आहे, आपल्याकडे युट्यूब वरनं पण जॉईंट आहेत, आपल्या गणितालय पोर्टल वरनं पण जॉईंट आहेत आणि इथे ही जी ओके. link आहे, ती कमी लोकांना पाठवलेली असते, त्यामुळे ओके, इथे तुम्हाला ओके. कमी लोकच दिसतील. ओके. आपण मग एक कसं आहे मिनिट तुम्ही करतोच आहे सुरू. आपण हो थांबणार चालेल नाही. चालेल. यस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. हम लोगों के साथ यूट्यूब चैनल से, हमारा जो यूट्यूब चैनल है वहां से और अपने गणितालय पोर्टल से भी काफी लोग जुड़ गए हैं. जूम लिंक पर भी काफी लोग जुड़ रहे हैं. यस, स्लोली हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग अपना वेबिनार तो शुरू करते हैं. यस, तो आज हम लोगों के साथ है मिस्टर किरण बर्वे. इनकी मैं पहचान बहुत ही संक्षिप्त में पहचान करा देती हूँ. किरण बर्वे सर, इनका MSc MPhil हुआ है पुणे यूनिवर्सिटी से और एज अ रिसर्च फेलो ये रह चुके हैं TIFR जैसे बहुत ही नामांकित संस्था में. वे CWPRS में भी सर एक दोनों हाँ, वे CWPRS में कार्यरत थे. उनकी सर्विस जो है, कार्यकाल जो है, सर्विस का कार्यकाल 30 साल उन्होंने मैथमेटिकल मॉडलिंग में काम किया है. उनके 30 से ज्यादा रिसर्च पेपर्स है, शोध निबंध, जो कि राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय दर्जा के हैं. वे एमटेक के स्टूडेंट्स को भी उन्होंने गाइड किया है और उनका मैथमेटिकल मॉडल्स में बहुत अच्छा काम है. यस, ही इज टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी एज अ फैकल्टी उन्होंने पार्टिसिपेट किया है और काफी टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी उन्होंने कंडक्ट किए हैं. पूना, सातारा, सांगली, कोल्हापुर, यहाँ से उन्होंने ये टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रन किए हैं. यस, और वो सर काफी जर्नल्स में काफी जर्नल्स में लिखते हैं और उनके लेख प्रसिद्ध है. जैसे कि शैक्षणिक संदर्भ. यस, ये एक बाई मंथली है जिसके लिए सर राइटिंग करते हैं, जिसके लिए सर अपने लेख लिखते हैं.
उसके अलावा उन्होंने एक रिसेंटली एक बुक पब्लिश किया है, गोष्ठी गणिताचा, और वो जो है उसमें बेसिक ऑपरेशंस जो मैथ्स में आते हैं, पजल्स और टॉपिक्स रिलेटेड टू मैथमेटिक्स ओलंपियाड। यस, मैथमेटिक्स ओलंपियाड ये ऐसी एग्जाम होती है कि जो कि मैथ्स में सबसे अव्वल मानी जाती है। यस, सो इन स्टूडेंट्स को भी सर गाइड करते हैं। तो मैं बर्वे सर को कहूंगी कि वो आगे अपना लेक्चर शुरू करें। सर आप शेयर कर पा रहे हो? हेलो, 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 हेलो। सर एग्जिट हो गए हैं, 1-2 मिनट रुकते हैं, ज्वाइन हो जाएंगे सर फिर से। So shall we start? यस सर, ओवर टू यू। सर आप देखिए आपको शेयर पॉसिबल है क्या? प्लीज कंफर्म कीजिए। नहीं है आप अभी। share- You have to enable me sharing screen if possible. 1 मिनट सर। सर आपको मैंने अभी को होस्ट बना दिया है, आप शेयरिंग कर सकते हो, ट्राई कीजिए। हाँ हाँ। Can you see this? यस सर, इट इज Actually, विजिबल। I wanted the session to be interactive, but it may not be possible, it seems. यस सर। So if I can request Sunilji, Avadut and Ashwini madam that you should respond to my questions, because without asking questions and without getting answers, teacher cannot really proceed. So
sometimes I will ask you questions, and as if you are teachers, you should answer them. So the topic here is teaching mathematics while Your voice solving is very puzzles. low. So your voice is very low. My voice is very low. 1 minute. Now, okay. Now can you hear me? Hello? Yes, sir. So the topic is teaching mathematics while solving puzzles. It may be a bit confusing, or sometimes to some it may be interesting. Let us see now what is, there are 4 or 5 parts that I am talking about, that is teaching and learning, the fundamental change, school level mathematics, the main areas to focus, logical thinking and puzzles. That is the way my webinar is going to be designed, and we will go forward. So the first statement, do you agree with this statement? So anybody of you can tell me, or if there is a chat facility, you can tell me. See, my statement is no one can teach anybody anything. Do you accept or not accept? Very true. Each one has his or own opinions. So Yeah. So you think it is true. So what is your opinion? Or, okay, anybody else? Okay, I will tell you what does this statement mean. This statement is perfectly all right. This statement is perfectly correct. Because unless and until you have any motivation or desire to learn, you will never learn. Secondly, it is you who has to learn. So whatever the process, either in the brain or physically or trying to solve problems, whatever, that process you have to carry out. So if you are not ready to do that, say nobody can make you do that. So no one can teach anybody anything. So then what I am asking, then are the teachers necessary? Because nobody can teach anybody anything, then are the teachers necessary? So what do you think? Good bole, sir. This may turn out to be a problem, but without answer, I cannot proceed. So anyway, I will tell you why teachers are necessary. That, see, sometimes students have motivation, but you have to keep the motivation alive. Explanation of the concepts and the procedure is required, but the explanation, the person who is giving the explanation, maybe teacher or maybe someone else, but that is not enough. So when a live teacher is there, whatever mathematics he is doing on the board, from that you learn. See, very simple thing, that teacher is solving a problem. जब एक अध्यापक अपने बोर्ड पे कोई लिखता है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करता है, तो वो जिस तरह से सॉल्व करता है, ये देख के उसको कॉपी करके बच्चे सीखते हैं. तीसरी बात ये है कि ए टीचर गिव्स ए गुड एटमॉस्फेयर टू लर्न. मीन्स आजकल ये स्कूलों में चेंजेस हो रहे हैं, अच्छी तरह के खेल से, एक्टिविटी से सिखाना शुरू है. आप अंकनाद से भी जुड़े, वो भी तरह तरह से ये जो लर्निंग प्रोसेस है वो एंजॉयबल कर रहे हैं. दैट इज मोटिवेशन बढ़ाने के लिए, और जो भी मोटिवेशन है वो स्थिर करने के लिए वो ये है. तो अभी नेक्स्ट है कि व्हाट डू यू थिंक
गणित की शिक्षा में हम क्या करते हैं? हम पहले गणित के सूत्र तथा उदाहरण सुलझाने के तरीके के बारे में बात करते हैं। ऐसे लगेगा कि कभी शिक्षकों को ऐसे लगेगा कि ये आदमी इस तरह से बोल रहा है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। नहीं नहीं, जो बात सही है कि आप पहले क्या करते हैं, तो गणित के सूत्र बताते हैं और उदाहरण सुलझाने के तरीके बताते हैं और वो तरीकों की प्रैक्टिस कर लेते हैं। फिर उसके बाद आप गणित में अंतर्भूत कल्पना के बारे में बोलते हैं या कल्पना समझाने की कोशिश करते हैं और फिर ऐसे सोचते हैं कि ये जो प्रोसेस है, इससे तर्कशुद्ध विचार करने की काबिलियत का विकास हो जाएगा। तो just to recapitulate that teaching in mathematics, the order nowadays is formulae, methods to solve problems, then comes explanation of concepts of mathematics, and then comes developing logical thinking abilities. I have been teaching for 25 years now for International Mathematics Olympiads, where students are performing great in the International Olympiad. Every year, Pune has a medal winner. So what is the thing is that what I do is, or what we in Bhaskaracharya Pratishthan do is, we reverse the order. We reverse the order. First, develop the logical thinking abilities. आप बच्चों को यदि विचार करने को सिखाएंगे तो आपका काम काफी हद से खत्म हो जाता है, खत्म ही हो जाता है। मैं आपको बाद में बताता हूं कि काम कैसे खत्म होता है, लेकिन पहला प्रेफरेंस क्या है कि आपको बच्चों को लॉजिकल थिंकिंग सिखाना है। फिर कंसेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स का जो भी बताने हैं, एक्सप्लेनेशंस देने हैं, वो देने हैं और संभवतः बाद में आपको प्रोसीजर एंड फॉर्मूले उनके ऊपर छोड़ देने हैं। तो ऐसे कैसे कर सकते हैं हम? तो एक बात मैं पहले पूछना चाहता हूं और फिर आप सबको बताना चाहता हूं, काफी जोर दे के बताना चाहता हूं, अहम तरीके से बताना चाहता हूं कि गणित के जो पाठ्य पुस्तक है वो पढ़ने के लिए है। गणित के पाठ्य पुस्तक पढ़ने के लिए है। मुझे अफसोस की बात है, मैं कहीं जगह जाता हूं तो 100 बार मैंने 100 लोगों को प्रश्न जब पूछा, यही क्या आप गणित के पाठ्य पुस्तक पढ़ते हैं? शिक्षकों के बारे में मैं बात कर रहा हूं। उन 100 शिक्षकों में से सिर्फ 10 शिक्षक गणित के पाठ्य पुस्तक पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि आवश्यकता ही नहीं ना। मुझे फॉर्मूले पता है, मुझे प्रोसीजर पता है, मुझे इस चैप्टर में क्या फॉर्मूले है, क्या प्रोसीजर है, क्या कंसेप्ट है, मुझे पता है। पाठ्य पुस्तक पढ़ने की जरूरत क्या है? It's not like that. In the introduction and whatever is the explanations given in the textbook are very apt, they are well thought of, and that will improve your teaching. But I want you to go one step ahead. Like one teaches English, what does one do? Today we are going to see this chapter or whatever, David and Goliath. So you ask someone to get up and read David and Goliath, the author, page number, this, and he starts reading. You cultivate this habit in your students. Please ask them to read the book. Ask them to read the textbook in the class loudly, and like in English, like in history, like in any other subject, whatever paragraph the student has read out, you should discuss whatever is given, whatever he has read. So ask questions to the students. What have you heard now?
what is your opinion about this? In mathematics, you never ask opinion. Why? In all other subjects, I have my own something. But in mathematics, no, the formula is there. This is there. I have to do exactly like that. No, I have some opinion always. So ask their opinion. Now you will feel this is vague, but you do it. Then you will come to know what happens. Then whatever their misunderstandings or whatever they have not understood about the previous related concepts and this concept, when you do this, that automatically surfaces. वो जो है, क्योंकि आप तो क्या कर रहे हैं, आप तो कुछ गणित पढ़ा नहीं रहे हैं, आप चर्चा कर रहे हैं, आप बातें कर रहे हैं, आप गप्पे हाँक रहे हैं, लेकिन गणित के बारे में गप्पे हाँक रहे हैं. तो जब गप्पे हाँक रहे हैं तो बच्चे बोलेंगे, और बच्चे बोलेंगे तो उनमें जो उसके रिलेटेड पहले वाली जो कंसेप्ट है उनमें से जो भी कठिनाइयां है वो भी सामने आती है, और आगे क्या करना है इसका भी एक तरह का बैकग्राउंड तैयार होता है, एक उत्सुकता बढ़ती है. तो ठीक है, फिर मैं अभी मेरे जो आज का वेबिनार है उसका जो मेन फोकस है, तो अब ये तो तय हो गया कि हम गणित उल्टी तरह से सिखाने वाले हैं. पहले लॉजिकल थिंकिंग की एबिलिटी बढ़ानी है. एज फार एज पॉसिबल द स्टूडेंट शुड थिंक लॉजिकली, of course by themselves. Nobody can think from other person's point of view. So they have to think, and if they have the habit of thinking, then they read the book, they will discuss the concept, and then leave the procedure to them. See, they will do it. 50 students class, 80 students class, whatever class, you do this and check. I know at present nobody believes in me that I can leave the formulae and the procedure to them. But then first thing is ask students to start thinking and make them start thinking. How is it done? The easiest way is through puzzles. Why puzzles is the easiest way? Because there is no one, when I have asked him, her a puzzle, or you open a puzzle book and read a puzzle, there is no one who doesn't think about it. Everybody starts thinking about the puzzle. Maybe after 1 minute, that person says that, okay, I don't want to do this, and fine. But at least 1 minute, he will think and make a conscious decision that whether I have to do this or not. So you try to solve it or don't try to solve it, you have started thinking. So that is puzzle. Puzzle makes you compulsorily think. So I am and you just 2 minutes. So can anybody tell me the answer?
Have you read the puzzle? Yes. Reading, sir. Okay. When you will teach students to read every day, they will read and understand very fast. Okay, so we will have to move ahead. So ABC are sitting around a table in this manner. So one of them is A, one of them B, one of them C. And second thing is that it is a circular table, which is important. And the third is that one of them is Marathi, one of them is Bengali, and one of them is Tamil. Okay, this is the data. So then they have given two conditions that one passes a card to the person who is on to the right. Okay. So there is a definite way of passing the cards. Fine. And two things are given that we gave cards to Marathi girl, A gave cards to the girl who gave cards to Bengali girl. There are only two statements given. So, and you are asked to find whether A is Marathi, Bengali, Tamil, and all. So, just I am showing you the arrangement. It is always good to draw figure whenever possible. Always draw figure. Now you see. Now I am trying to incorporate whatever given to me. I may draw arrows. Yes, I am doing this way. So A gives to the right, that is C. C gives to B. B gives to A. That is fine. See, now when you have drawn and made this arrangement, first thing is very simple. B gave cards to Marathi girl. So B is not Marathi. Okay. So B is not Marathi. A gave cards to the girl who gave cards to the Bengali girl. Now in this figure, A has given cards to C and C has given cards to a Bengali girl. So I think now I will not finish off this puzzle. Now with this analysis, the puzzle is done. But if I had given you 2 more minutes, which was not possible here, everybody could have found out the answer and be happy. See, it is a very good thing that Ashwini madam has kept her video on so that I can see the expressions and I feel that yes, that puzzle has taken grip over her. So now, very easy. Now I am asking you a question that is now very easy because now there is. मैं 2 अंक बोल रहा हूँ, that means 2 पूर्णांक है, 2 पॉजिटिव पूर्णांक है और इनकी जोड़, इनका बेरीज आना चाहिए 5, तो सिंपल है. मेरा ये सवाल है कि आजकल थोड़े बहुत इस तरह के खेल आते हैं, लेकिन क्या ये हम दूसरी कक्षा के बच्चों को नहीं पूछ सकते? तो कितना इंटरेस्टिंग होगा उनको. 1 + 4 5, 2 + 3 5, 3 + 2 5, 4 + 1 5. Why can't we ask this? Then ask them to do this thing that give 2 numbers which add to 10. Now
this becomes a question, but then this becomes an interesting activity. One can, at the second standard level, third standard level, this is a puzzling thing. They will be trying and doing it. The motto is not to know which two numbers add to 5. The motive is to make the students think. See, I am very clear cut about this. Being a mathematics student, I will not leave my attention from, yes, Preeti Khutade has given the answer 1 plus 4 is 5 and 2 plus 3 is 5 in the chat. So what I want is, you started thinking. Okay. So I have given A plus B, that's A adik B daha tar काय. Now this is again very simple. This time I will सर मी give. सांगू बोला. सांगू का उत्तर मी सांगू का सर मी उत्तर हो. 1 अधिक 4 येईल 1 अधिक 2 अधिक 2 येईल परत हॅलो आपल्याला 3 अंक नाही घ्यायचे, आपण 1 अधिक 4. अच्छा मग 2 अधिक 3 पण येईल सर आणि 0 अधिक 5 पण येईल. बरोबर बरोबर. आता आपण तिच्या पझलचं पण उत्तर द्या मला. हो ह्याचं पुढचं पझल का मागचं पझल म्हणताय? 5 people are eating apples. हा A finished before B. A finished before B, but behind C. D finished before E, but behind E, behind B. So who finished first, then who finished, like that. Sir, before going to this puzzle, याच्या आधीचा जो पझल होता त्याच्यामध्ये 1 plus 4 कॉम्बिनेशन दिलं, 2 plus 3 कॉम्बिनेशन दिलं, 0 plus 5 दिलं. अदर वे राउंड पण पॉसिबल आहे. 1 plus 4 इट कॅन गो टू 4 plus 1. हो मी सगळी उत्तरं दिली नाहीयेत. येस. सो असं जर बघितलं तर 6 जोड्या होतील किंवा 6 वेगळे वेगळे प्रकार होतील ज्याप्रमाणे तुम्ही ते कॉम्बिनेशन्स करू शकता. आता याच्यातली अजून एक व्हेरी इंटरेस्टिंग गोष्ट अशी आहे की याला पार्टिशन प्रॉब्लेम म्हणतात आणि हा वाटतो तितका अजिबातच सोपा नाही आहे. कारण तुम्ही आता गेलात 10 आणि तुम्ही आता फिक्स केलंय की 2च अंक घेणार आहेत आणि मी अजूनही तुम्हाला हेही सांगतो की ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टंट, यू ऑलवेज गो इन द इन्क्रीजिंग ऑर्डर. म्हणजे 3 असेल तर तुम्ही 1 1 करा, 1 1 1. पण गोष्ट अशी आहे की मी 2च दिले तरी देखील 10ला मला 5 उत्तर आली, 12ला अजून येतील. पण ज्यावेळेला मी 10 घेणार आहे त्यावेळेला मला 1 plus 1 plus 1 10 times ही देखील पॉसिबिलिटी आहे. इफ आय एम इंटरेस्टेड इन द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन्स which I can take of positive integers who add up to a certain number, then there are now so many possibilities. You can keep 10, then I have written that 1 plus 9, 2 plus 8 and so on. If order is not important, means always in increasing order. Then for 3 I go 1 1 8, 1 2 7, 1 3 6. Now I am giving you a certain order in which I am building this partition. This is called partition. And why I am saying this is interesting enough is that one of the major contributions of there are hundreds of contributions of Ramanujan. One of the very important contributions of Ramanujan are in this partition problem. There are no fixed formula for the partitions of n, but then he gave
very beautiful series. He gave beautiful kind of, if n is 11p plus 1, p is a prime like that, he did a great work in partition. So it is still an open problem. So anybody of you can try and give partition problem. You will be world famous and you will be great. It's difficult, but keep trying, you will enjoy. So now 5 people are eating apples. If you have read and taken down the problem, I can move to whiteboard. Can I move to whiteboard just to show how we analyze? Sir, Preeti madam Or has it given is the answer easy? in the chat box. Preeti madam. Okay. Yes. So Preeti madam has given the answer. Can you give me how? Sir, first, in this puzzle, 5 people eating apples. The A finished before B, but behind C. That means C So, first finished, then A, then B. And second is D finished before E, but behind B. That means B first finished, then D, then E. According to these both conditions, we can write the order like C first, then A, then B, then D and E. very good. Very clear cut and very good answer. Thank you, sir. Thank you, Preeti madam. Can somebody else? This is same thing. Both the puzzles are of the same nature. You see, if you make this an habit of giving 2 puzzles each lecture, the first thing it will be that you will be the most popular teacher. That is the first thing that will happen. And your students will do better in every subject. And they will give quite an ingenious reasons not to do homework, not the usual answer. They will think and give ingenious answers about which you cannot do much. But really, I request you, I urge you to give 2 puzzles every lecture. See, in the second, before Preeti madam says, I would like to give you a hint. You make cases. See, what is not known that whether Anne is married or not. So, suppose Anne is married, then what is the situation? And suppose Anne is unmarried, then what is the situation? Make two cases. See,
there is one more thing that I was also making that mistake this time. That in the first reading, is a married person looking at an unmarried person? So is it always related with an? There are three persons, one is married, one is unmarried. Okay, suppose Anne is married. What you know is Jack is married and Jack is looking at Anne, but Anne is unmarried. The sentence given is then true. Hello? 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 Yes, am I audible? Hello? Yes, I think some issue with the internet. Okay, so maths can be made very interesting through puzzles. Yes, so आप देख सकते हो कि कितने इंटरेस्टिंगली हम लोग मैथ्स कर सकते हैं. Yes, ये बेसिकली एंटाइज करेगा आपको थिंक करने के लिए. Yes, I think sir is back. Sir, you're not audible. Sir, please unmute. Yeah, there is a intermittent net problem, so I will stop my video and again share the screen. So I think so. Is the answer clear? Always a married person is looking at unmarried person. Because if Anne is married, Anne is looking at George, who is unmarried. If Anne is unmarried, Jack is married and who is looking at Anne. So yes. See, yeah, that was a correct answer. Bhaskaracharya Pratishthan conducts a examination, which is we call pre-Olympiad examination. Means it is a tough examination. 2 stages examination for 5th and 6th standard students. It is an all over India exam. So 11 state students do appear for this exam. And one of the question was this: we have 40% puzzles in those papers. It is a rule that we will have 40% puzzles. So don't try to do this, just read, because then there are other things which I want to discuss. I wanted to show that such kinds of puzzles are given, and this carried 5 marks. For 5th, 6th standard students to solve this puzzle, it carried 5 marks and it was justified. It is not a very simple thing. See, now this, what I am saying is, see, everybody teaches right angle triangles and the sum of the angles of a triangle is 180. See, these are the only things that you know. You want to know that this this is a 90-degree angle, this is 90 degree, this is 90 degree. And you see, when very few angles are given and all other angles can be calculated. See, now this is 60 degrees, then this is 30. If this is 30, then this is 30. But now you have given this is 112. So 112 minus 30 is 82. This is 82.
whatever. Now you see, yeah, this is 40, this is 50, this is 50. Now 112, 50, so this is 62. Then whatever. The way you go, proceed. Or shall I move slowly? 60, 30, 30. This is 112, so 82. And this is 820, so this is 68. So this is 68. This is 50. Now n is 50. This is 68. So I know this. So I know t. In this manner, you can ask the students to get as many angles as possible in this figure. Will it not be a fun? It will be a fun. And you want them to do practice. And this will give you them a practice also. It will give you them practice of exterior angle theorem. Sum of the angles of a triangle is 180. When one is 90, other angle is given, how to calculate. So this is a very nice and simple way to entice. Okay. Now we come to a standard example of two persons are walking towards each other on a walking path that is 20 किलोमीटर लॉन्ग. एक बड़ा रास्ता है, 20 किलोमीटर लंबा है, सीधा है, और एक इस छोर से निकलता है, वो दूसरा उस छोर से निकलता है, एक दूसरे के पास आने का कोशिश कर रहे हैं. तो पहले का रेट है 3 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर, और दोनों को एक दूसरे के साथ को मिलने के लिए कितना समय लगेगा. ठीक है, ये as it is, this is interesting. Yes, as it is, this is interesting. What I am suggesting is, why two persons? Instead of making things impersonal by calling two persons, why can't you give names? And that too, can't you choose the names of two students in the class? Yeah, you will say that this is just a trick and this is not a good trick. Maybe. My motto is to make mathematics interesting and students get interested. See, the moment I say that Mohit and Nitin had fought yesterday, therefore they were placed 20 kilometers apart, and now Mohit is coming with 3 kilometers per hour speed and Nitish is coming at 4 kilometers per hour speed towards each other. Now you see there is a drama. Now the simple example is turning like a drama and like a puzzle. So everybody will get involved. The answer is it 20/7. That many hours it will take. So you can just say that they started with 2. That will they meet before 5? Like that also. So one has to be a bit dramatic. Okay. Now, having learned what is triangle inequality, you just say that in this triangle, all the sides are integers. Maximum side is 6. How many different triangles are possible? Now, you are given actually 2 sides. One is 1 and other is 6.
ask the students to fill which are the possible. 116 is not possible. 126, 136, 146, 156 is also not possible. 166, is it possible? Yes. Is there any other possibility? Yes, anybody? Can you have a triangle with integer sides, maximum side 6? See, Hello. yeah, I am asking you the question that, so what is only 166 is possible, but then they have said that you can have side less than 6 also. Maximum length is 6 of one of the sides. Yeah, so it can be 5 also. Yeah, so it can So be less when than it 5 is only. 6, when it is 6, I showed that 166 is the only answer. Mhm. Hmm. Yes, any answers? Yes, any answers? मॅडम जर 2 मिनिट थांबा ना, जास्त वेळ द्या. हो, देतो. थोडंसं देते ना, नो प्रॉब्लेम. काहीच अडचण मला नाही. ऍक्च्युअली हा 2 मिनिट. हम्म. मला स्टॉप शेअर करायचं आहे, मला माझा हे मिळत नाहीये. सर वरती ऑप्शन येतं वरती. हा, आत्ता आला बऱ्याच वेळानंतर. हा. Okay, now are you able to see? सर इट इज नॉट विजिबल जस्ट नाउ, पण व्हाईट बोर्ड दिसतोय. हा, तेच व्हाईट बोर्डच पाहिजे मला. व्हाईट बोर्ड दिसतो. येस येस येस. Now you see with maximum side 6. 6, you have 1, 6, 6. Now 5. Now this is 1, 5. There is still a problem, you see. It cannot be 1, 4, 5. It cannot be 1, 5, 6. It cannot be 1, 4, 5. Because they are integers. So who is the culprit? Because now you know if it is 4, 3, 2, 1, you will get 1, 1 triangle. Okay. So if now you see, now we are evolving. I gave something, then there was only one answer. Then I changed one condition. I said that you can have 5, 4 as the maximum size. After doing this, the teacher and student both have understood that with 1, you do not have much freedom. With 1, you don't have much freedom. So the sides can be 1 or 2. 1 or 2 is one of the sides.
And now let us check what happens with 1. So it is 155. Yes. Now with 2. With 2 now there are 2 possibilities. Isn't it? With 2 you got 2 possibilities. Now 166 was a possibility. Now with 2 you have so in this manner we can go ahead. Madam, I think I have taken more time. So I think I will. No problem, sir. Actually, this PPT we will circulate among our teachers. And Yeah, we will yeah. ask But them to then I have to ask this question. Yes, yes. No And problem. you have to give the answer, a true answer to me, but at least to yourself. When did you think so much at length last? एक साथ इतने देर सोचा था. एक्झाम मध्येच ना आपण हे सगळं विचार करतोय मम्मी. आवाज म्हणजे का थोडक्यात हा हॅलो मला थोडक्यात तुम्हाला एवढंच विचारायचं आहे की बुवा तुम्हाला ही 2-3 पझल दिली आता म्हणजे वय मोठं आहे तर मोठ्या वयातल्या लोकांना काय पटकन उत्साह येतो असं नाही वगैरे पण तरी देखील ही 2-3 साधी पझल दिल्यानंतर तुमच्या सगळ्यांच्या मध्ये उत्साह निर्माण झाला विचार करायला लागला. नक्कीच सर, नक्कीच. Perfect, sir. Sir, can we go to the next slide? Sir, am I audible? Hello? Hello? Sir? ओके सो आप देख सकते हो कि ये पजल्स के माध्यम से सर ने बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोगों को ये समझाया है कि गणित कितना सुंदर हो सकता है. यस, तो आप देख सकते हो कितना रंजक हो सकता है और समझ में भी बहुत जल्दी आता है. यस, तो सर जब तक जुड़ रहे हैं यस मैं आपको गणितालय ये जो मंच है उसके बारे उसकी विशेष उपलब्धियों के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहती हूँ. सर जुड़ ही जाएंगे, सर जुड़ेंगे तो हम लोग उनसे बात करेंगे ही और वो भी हमें और नए-नए पजल्स बताएंगे. यस, ये गणितालय ये जो मंच है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है. इसके लिए आपको कोई मूल्य नहीं देना पड़ता है. बेसिकली ये बच्चों में गणित विषय की रुचि बढ़ाने के लिए ये मंच है. इस पे बहुत सारी गतिविधियां होती है जैसे गणित विषय को लेके या कोई कंसेप्ट को लेके हम लोग हर मंगलवार को एक पहेली डालते हैं और ये जो पहेली है इसका आंसर आपको गणितालय पोर्टल पर ही देना है और ये जो आंसर होगा यस तो यस सर जुड़ चुके हैं. यस, थैंक यू सो मच सर. हम लोग कंटिन्यू करेंगे सर के लेक्चर के बाद. ओवर टू यू सर. सर यू आर नॉट ऑडिबल. सर अनम्यूट कीजिए प्लीज. तो ओके तो मैं अभी लास्ट समअप भी करना चाहता हूँ कि हमने ये मान लिया कि कोई किसी को पढ़ा नहीं सकता लेकिन पढ़ने के लिए प्रवृत्त कर सकता है. वी कैन मोटिवेट आवर स्टूडेंट्स टू लर्न एंड one of the second thing which I made the point is that we have to
change the order of our preferences. Our priority should be to cultivate the ability to think. सोचना चाहिए, सामने वाले व्यक्ति ने सोचना चाहिए. ये जब आप कर सकते हैं तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है. फिर कंसेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स पे ध्यान देना चाहिए और बाद में प्रोसीजर सब सीख जाते हैं. उसका मैं उदाहरण देता हूं आपको. 4 साल के बच्चे, आपका जो अनुभव है उसमें अपने माता या पिता का पासवर्ड समझकर उनका मोबाइल स्टार्ट करके जो चाहिए वो कर सकते हैं. दैट मीन्स दैट 4 साल का बच्चा प्रोसीजर सीख गया. जो प्रोसीजर के बारे में बहुत जो डर है, हमको प्रोसीजर की प्रैक्टिस करके लेना है, वो उतना सही नहीं है. अब पहले थिंकिंग बढ़ाओ, फिर कंसेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स पे डिस्कस करो, फिर प्रोसीजर और फॉर्मूला तो वो कहीं गए ही नहीं है ही. दूसरी बात जो मैंने आपसे बात की वो रीडिंग. रीड मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक्स and make students read mathematics textbooks. And then I have displayed to you how puzzles make one thinks, how there are different kinds of puzzles which make you think logically, some kind of numerically, some with the figurative, also with the understanding of some of the angles of triangle is 180 and so on. So I thank Dr. Datar and Ankanath for giving this opportunity. Thank you all. थैंक यू सो मच सर. बहुत ही बढ़िया लेक्चर था और it has really enticed us to think. It has really enticed us to think. ओके सो आप बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे तो हम लोग गणितालय मंच जो है, गणितालय हमारा जो पोर्टल है जो फ्री ऑफ कॉस्ट के बारे में, उसके ऊपर जो भी विशेष उपलब्धियां हैं उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे. तो ये जो मैं बात कर रही थी, हम लोग हर मंगलवार को एक पहेली डालते हैं, तो उसका आंसर जो है उसे सुलझाना है और उसका आंसर जो है आप गणितालय पोर्टल पर पोस्ट कर सकते हो. यस, उसके अलावा हम लोग, आप अगर देखोगे तो हर क्षेत्र में गणित है. यस, तो निसर्ग में गणित है, सुर ताल में गणित है, डांस में गणित है, सब जगह पर गणित है. ओके, लेकिन अगर ये गणित हम लोग समझ पाते हैं, यस, तो ये किनसे समझाना है? जो उस क्षेत्र में तज्ञ व्यक्ति है, उनसे ये हम लोगों ने समझा के लिया है, जिसके ये हम लोगों ने एक वेबिनार सीरीज अरेंज की थी. और ये वेबिनार सीरीज जो है, इसमें तज्ञ जो उस क्षेत्र में जो तज्ञ लोग थे, उन्होंने ये वेबिनार्स के रूप में हमें बताया है कि गणित कैसे इन्वॉल्व है. इसके अलावा लीलावती, यह जो ग्रंथ है जो भास्कराचार्य जी ने, उन्होंने अपने बेटी को गणित पढ़ाने के लिए, गणित सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाने के लिए जो लिखा था, इसका निरूपण डॉक्टर सुधाकर अगरकर जी जो है, जो TIFR से रिटायर हुए हैं और प्रेजेंटली ही इज वर्किंग एज अ डीन एट द VPM इंस्टीट्यूट. यस, तो इन्होंने इस ग्रंथ का निरूपण मराठी लैंग्वेज में किया है, जो हिंदी में अभी कुछ ही दिनों में हो जाएगा. यस, इसके अलावा हम लोग, हमारी एक नई एक्टिविटी जो है जिस पर हम लोग अभी काम कर रहे हैं, वो है कि उच्च ज्वार जो आते हैं, यस, द क्रू सोमन, ये जो बहुत ही बड़े ये एक अल्मनैक मेकर यानी पंचांग करते हैं, जो कि बहुत ही दूरदर्शी है, ज्योतिषी है. यस, इन्होंने जो अध्ययन किया है और भविष्यवाणियां की है उच्च ज्वार के बारे में, तो इस घटना का, यस, ये जून, जुलाई और अगस्त में होने वाली है. तो इन भविष्यवाणियों में शामिल गणित पर सर प्रकाश डालने वाले हैं. यह हमारी जो वेबिनार सीरीज है वो जल्दी शुरू हो जाएगी. 2 जून को ये हमारी वेबिनार सीरीज शुरू हो जाएगी. इसमें हम लोग मौसम विज्ञान विभाग के साथ भी काम करने वाले हैं और करने की भी योजना हम लोग कर रहे हैं, ताकि पूर्वानुमानित समय पर इन उच्च ज्वारों की घटनाओं के प्रमाण हमें
मिल सकते हैं। इसके साथ खगोल भौतिक शास्त्रज्ञ भी इस घटना में शामिल गणित को खगोल भौतिकी दृष्टिकोण से भी प्रस्तुत करेंगे। इन सब गतिविधियों को वेबिनार की सीरीज के माध्यम से हम लोग विद्यार्थियों के सामने लाने वाले हैं। यह एकमात्र ऐसी गतिविधि है कि जो वेबिनार सीरीज में हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं और जिसके लिए 1 लाख से भी अधिक छात्र प्रस्तुत रहेंगे, जो इस प्राकृतिक घटना की भविष्यवाणी के पीछे जो भी गणित है, गणित प्रमाण को महसूस करेंगे। ये उच्च ज्वार जून, जुलाई और अगस्त के महीने में आने वाले हैं। हम लोग 2 जून से एक परिचयात्मक व्याख्यान इसके बारे में हम लोग आयोजित कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये सारी उपलब्धियां, इससे और भी ज्यादा उपलब्धियां हैं कि जो हमारे गणितालय मंच पर, गणितालय पोर्टल पर फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों के लिए उपलब्ध की है। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच बर्वे सर, आपने बहुत ही अच्छा लेक्चर दिया which really enticed us Thank to you. stay. And thank you so much and we expect cooperation, ऐसे ही cooperation आप हमारे साथ करेंगे और इसी के साथ मैं सभी लोगों की Sure. अनुमति लेती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद।